Hi, good evening, everyone. I'm here with Shivaditya. Shivaditya, would you like to introduce yourself? Yes, my name is Shivaditya Chakrabarti. I was All India rank 86 in the CLAT 2026 paper, and I was state rank 2 at West Bengal. Okay. Shivaditya, could you please talk about your journey of preparing for CLAT, how it has been, your highs, your lows, everything which you want to share with future aspirants? Yeah, so once I started just around, I would say, March of this year, 2025, and I was more or less trying to, like, honestly, I was being a bit lazy about it up until, I would say, May, June-ish, around that time. And वहाँ पे I felt like I got very serious. Up until I was thinking कि okay, अगर ये नहीं हुआ तो SLAT करेंगे कि वो करेंगे. I think one big mentality I would say you should have is that CLAT is a big exam and you should not think of alternatives too much when giving the preparation. Because you have distracted कि अच्छा CLAT क्या फर्क पड़ता है, SLAT करते हैं कि ELET करते हैं, preparation हो नहीं रही मुझसे. That is a very big problem I see many people have. कि they look at CLAT also as a backup more so than a front option. Right. If you consider too many options, you cannot be straightforward in your preparation. And once I did that, my scores jumped immensely. I was getting 70s, 80s maybe, and I went to 90s, 95. And all of that was just a mentality change. I worked harder. I thought I studied GK better. All of those changes really happened when I started taking it more seriously myself. Okay. So if you want one advice, it is to be a little bit single-minded about your preparation to a degree. That's my main advice to anyone who's preparing right now. If you're struggling, maybe think about your mental aspect. Because CLAT, there are 1,000 kids who have good abilities. इस साल 1,000 people got 90 plus. वो फर्क कहाँ बनता है in your mentality as a person. If you can stay calm, if you are sure कि of your abilities, you'll make it. So teachers तो आपको पढ़ा लेंगे, आपको ability, आपको अपनी concepts पढ़ा लेंगे, आपको mock दे देंगे. But how you approach them, how you are able to think about your own prep from a different aspect, I think that's what makes a difference between somebody who is a good candidate and a great candidate. Right. And Shivadit, talk about mocks. I mean, how many mocks you have given? What was your next step once you have written the mock? What was the next thing you did? Apart from, of course, asking what's your rank in the center level, sir? Of course, एक चीज है, I would say कि I'm a bit comparison heavy. वो तो थोड़ा सा as a person, I like to compete with people a lot. But I'll tell you one thing, mocks तो मैंने बहुत सारे दिए. I think just at center उन्होंने मैंने 30 mock दिए होंगे. वन वीक में एक बार होता होगा. आई थिंक मैं 30 हफ्ते तो आया ही हूँ. आई थिंक ऑनलाइन लेके या 50-60 मान ही लो, इफ नॉट 70-80 बहुत सारे मॉक्स दिए मैंने. आई यूज्ड टू व्हेन द ईयर एंडेड अराउंड अक्टूबर टू सितंबर इश, आई वाज गिविंग 2 to 3 मॉक्स अ वीक, if not more. If I felt like it, I would give 4. I had many from LE. I was giving we had 2 mocks a week. I would give the champions mocks. I would give the older mocks that I hadn't done. I would give older material. I even gave a mock from last year from ability. So I think to me, mocks matter very deeply in your preparation. As for mock के बात करना चाहिए, comparison is one thing. Look at your mistakes. Like what I would do is I would go through the analysis page, and legal पे होता भी है. They give you your own mistakes वाला page. They tell you what exact concepts you make mistakes in. They'll tell you, okay, you have a 70% rate in inference. And they'll tell you what kind of inference you make mistake in as well. So whatever tools they're giving to you, utilize all the tools that they give you, because I think at the end of the day, they're all in front of you. You have to work on them. जो गलतियां है, work on it कि अच्छा. Use ChatGPT. I was using ChatGPT for a while. I used to send my mistakes. I would ask it to explain the reasoning to me. I would give it my reasoning and it would work for me. कि अच्छा, okay, you're wrong there, you're wrong here. Anything. अपने दोस्तों से बातें करो. I had many friends who were here at Liga. I found very people of crack CLAT also. Having a good group around you helps a lot because you can discuss mock with them, you can discuss prep with them. Many things can happen. And essentially, don't just give papers. Right. What you give in that 2 hours hardly matters. What you do after the 2 hours what actually really makes a difference. Because हाँ, अगर आप मार्च में पढ़ाई कर रहे हो, if you start in March, let's say, what you get in that mock hardly means anything. But if you can work on the mistakes in March, the payoff in December is far bigger than doing good in March itself. Right. So since you have taken, you've been talking about champions batch, and I know that you were in school. Yes. So how have you been? Because there are a lot of students who are in school. They are preparing for CLAT. Now school studies and being in a champions batch with so many mocks, analysis. How have you been able to strike a perfect balance? I mean, what's the secret sauce? I'll tell you एक चीज, जिस बहुत बच्चे साइंस में होंगे, मैं साइंस में नहीं हूँ, आई एम इन ह्यूमैनिटीज. तो प्लीज टेक एवरीथिंग आई से कि आई से कि अच्छा ये पढ़ाई वाज इजीली हैपनिंग. अगर आप साइंस में हो, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट बैलेंस फॉर यू, आई एम श्योर. बट आई टेल यू पर्सनली, आई वुड जस्ट स्टे ऑन टॉप ऑफ थिंग्स. लाइक एक चीज है कि प्रोजेक्ट्स, आई वाज वेरी लेजी विद देम इन क्लास 11 क्लास 10, बट मैंने इस साल बहुत जल्दी कर लिए सारे प्रोजेक्ट्स अपने.
Because I knew कि start of the year it matters less what you're doing. Because आखिरी 3-4 महीने is where the difference is made. उस महीने की जीके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके मॉक्स आर मोर इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इन दोज लास्ट 3-4 months मैटर्स फार मोर. तो आई वुड से फ्रंट लोड करिए अपने कामों को, फ्रंट लोड योर स्कूल वर्क, फिनिश इट ऑल ऑफ एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, जितना हो सकता है करो. वट एवर यू कैन डू, कीप योर टाइम मैनेज प्रॉपरली, रेस्ट ऑफ इट कैन कम टू यू नेचुरली. इट जस्ट डिपेंड ऑन योर वर्क रेट एज अ पर्सन. अगर आप कोई हो जो 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, देन तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. 3 घंटे स्कूल का करो, 5 घंटे क्लैट का करो, क्लैट में आपका हो ही जाएगा इतने में. जस्ट डिपेंड ऑन हाउ यू विश टू डू इट. बट माई एडवाइस इज फ्रंट लोडेड, फ्रंट लोड करके कर लो. एंड ऑफ कोर्स माई टीचर्स वर वेरी हेल्पफुल टू मी. मेरे को अलाउ किया था टू skip school sometimes for a long periods of time. They were very okay with it, very supportive of me. अगर आपके टीचर्स ऐसे हैं, then great for you. If it's not, then more load for you to a degree. But I feel even without all of that, I only took leave in November. Up until then, I managed my work just fine. Even school में आज I'm top of my batch in my school also, in my fields, in my subjects. So to me, it's not like possible नहीं है. It is simply difficult. Right. And what has been your overall experience at LE Kolkata Center throughout the year? You've been coming, writing mocks, the champions batch and everything. How has been your experience at the offline center? Oh, amazing. I think one of the best things about the center is कि they make the environment for you. कि यहाँ पे आके you can feel nervous. ऐसा होता नहीं है कि आप घर पे बैठ के बस घर पे लेटे मॉक दे रहे हो आप, जो मैंने किया है अपनी लाइफ में, सच बोलूँ तो. बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे आना द बिग डिफरेंस. लाइक आई वुड ट्राई वेरी एक्टिवली टू कम हियर. हाँ, वेबसाइट इज अमेजिंग, मॉक जल्दी हो जाते हैं, दे टाइम यू वेरी वेल ऑल्सो, इन टाइम योर सेक्शंस. इट इज हेल्पफुल टू इन दैट डिग्री. बट एक चीज है कि वो माहौल नहीं बनता आपके घर पे. यू आर वेरी कंफर्टेबल. यहाँ आके यू कैन सी यू ऑन द बेंचेस, एवरीबडी अराउंड यू, एवरीबडी इज अ कॉम्पिटिशन. यू कैन सी तुम्हारा वो कौन है, तुम्हारा दोस्त कौन है, फ्रेंड्स आर विथ यू. बट इन दैट मोमेंट वो दोस्त चले जाता है एंड इट बिकम्स कि ये एक और एस्पिरेंट है, मैं एक एस्पिरेंट हूँ, एंड इट बिल्ड्स एनवायरनमेंट इनसाइड यू. मैं बोलूंगा इफ आई हैड नेवर गिवन द मॉक्स यहाँ पे, आई वुड हैव नेवर फेल्ट the way to be able to compose myself at when it happened in the exam. Because exam was unexpected. सब जानते हैं पेपर के बारे में. उसमें AR था. मैंने AR देख के मैं थोड़ा पैनिक किया था, सच है तो. But I realized कि मैंने marks दिए हैं. If I had never really come here to do that, I would have been really foreign to me. And it wasn't because I'd come here. And our teachers बहुत helpful है यहाँ के. I had done the boot camp here as well. 4-5 दिन के लिए we were doing. They were very helpful to all of us at all times really. No, अगर आप सर मैं आपको कह सकता हूँ, बहुत बच्चे है कि फॉर मैं बहुत टाइम के लिए पे बस टेस्ट का बच्चा था, बहुत टाइम के लिए खुद का कोर्स भी लिया मैंने बाद में, एंड देन आफ्टर चैंपियंस के बाद. बट बहुत बार मैं सर को पूछा था कि सर मुझे लाइब्रेरी यूज़ करनी है, कि सर मुझे वही फीचर कंप्यूटर यूज़ करना है, इसके लिए कर सकता हूँ क्या? सर अलाउ भी करते हैं, सब बच्चों को करते हैं. मेरी बात नहीं है ये. सर वॉज हेल्पिंग मी लॉन्ग बिफोर ही न्यू कि मेरे स्कोर क्या आते हैं, कि मेरे वो क्या आते हैं. वो सबकी हेल्प करते हैं. तो आई वुड से कि सेंटर ने मेरी बहुत हेल्प की अपने मेरे पेपर के टाइम पे. थैंक यू सो मच. नाउ व्हाट्स योर फैमिली रिएक्शन? नाउ यू आर state rank 2 and all India rank, which you have already told. So how's your family feeling? Oh great. I mean मेरी mom तो obviously she's been very helpful to me throughout my whole prep. वो खुद एक टीचर है, टू इंग्लिश पढ़ाती है, and she's always been the biggest support in my whole prep, in my life really as a whole, right? And I think उनको बोलना कि आ चुका है. I think एग्जाम के सेंटर मेरे साथ थी वहाँ पे, बहुत अच्छा गया. But then when the score truly materialized, वो रैंक मेरे मुंह के सामने आया, I could really feel कि यार it's all culminated to something. इतना जो काम किया है मैंने, it has paid off, and I felt कि अपनी मॉम को बोल पाना कि मैं रैंक 86 आया हूँ, मेरा स्टेट रैंक ये है, was a very big deal to me. पापा ने भी कॉल किया, पेरेंट्स ने कॉल किया, दोस्तों को बोल पाया. My friends and me have been through this whole journey for the whole year. उनके बिना मैं कभी होता नहीं जहाँ पे मैं हूँ, मेरी मम्मी के बिना भी नहीं, हम दोस्तों के बिना भी नहीं. My friends themselves had pushed me far beyond what I would ever be. मैं कभी भी कुछ नहीं, I'm telling you, मेरा जब मैं 70s में था, I was never even sad about it for a while. Until I saw my friend 90s में है, 95 में है, मेरे को लगा काम तो करना चाहिए. वो खुद बोलते तुम काम करो, हो जाएगा, नहीं हो. And they motivated me so much. मैं कहूँगा अगर मेरी if you take anything away from the interview, take one thing, अपने दोस्त अच्छे रखना कभी भी. Never keep anybody around you जो तुमको लिमिट करता है. Because अगर वो मेरी हेल्प नहीं करता, I would be nowhere in my life. So हाँ, I mean to my friends सबको thank you. I'll name them also, Shirato, Shagnik, Rishabh. Thanks to all of you guys, really. Sharno, all of you guys, all of you pushed me way beyond what I would ever be. Thank you for all that, really. So last, how are you planning to celebrate? What's the plan? अभी तो गोवा ट्रिप जा रहे हैं सैटरडे. 2 दिन में गोवा जा रहा हूँ मैं. अच्छा. बट हाँ, मैंने सेलिब्रेट तो बहुत किया है ऑलरेडी, खाना वाना खाया है थोड़े. अभी तो केक कटिंग भी हुई आपके साथ, तो बहुत अच्छा चल रहा है. एंड देन उसके बाद 10 दिन में 15 दिन में हो जाएगा कि हाँ हो गया है, अब बोर्ड्स आ रहे हैं, पढ़ाई करो. ठीक है, इट्स मोमेंटरी. तो स्टार्ट ऑफ द जर्नी है, लॉ स्कूल जाना भी है, 5 साल पढ़ाई भी करनी है. इट्स जस्ट द स्टार्ट.
बट इट्स गुड टू सेलिब्रेट थोड़ा सा. काम तो किया है. So yes. You deserve it. Yes, Thank you sir, thank you. आप कह रहे थे बहुत means a Of lot. course. Thank you so much Oh, thank you sir. for taking time out, Shividit. Congratulations once again, and we hope to see you soon at the center once you are back from Goa. Oh, absolutely, sir, absolutely. Thank you guys. Hope you learned something from the interview. If you didn't, well, it worked for me, right? Chalo guys, see you.